So, good afternoon, teachers. Good afternoon, students. Class 6. Excuse me, ma'am. हाँ जी मैम. Ma'am, please check the setting of Arjuna class Okay, ma'am. setting, ma'am, because some students are not visible. Yes, ma'am. मैं देख रही हूँ. Now it is. I will ask the students. I will manage the thing, right? Okay. Oh, thank you, ma'am. Thank you. So, beta, everyone has the worksheet, previous worksheet. पिछली बार जो मिली थी हमें. How many of you? निकालो अपनी पिछली वाली निकालो. नहीं तो कोई बात नहीं. We will do that, but you have to be attentive, right? Everybody. टीचर्स प्लीज चेक कि सबके पास है. नहीं है तो शेयर करें बच्चे. ओके. जिन जिन के पास है निकालो. जिसके पास नहीं है शेयर करो. फिर भी नहीं है तो वी विल डू समथिंग. चलिए सिट स्ट्रेट. सिट स्ट्रेट. सीधे बैठो. एकदम सीधे बैठो. एंड डू सम स्ट्रेचिंग फॉर 1 मिनट. डू दिस थिंग. स्ट्रेच योर नेक. ऐसे नहीं, ऐसे पीछे पीछे. नेक की स्ट्रेचिंग करेंगे. बैठे बैठे थक गई है अर्जुन. जल्दी से. एवरी स्टूडेंट ऑफ अर्जुन, एमी, एबल, अरोरा, बुकर, बॉर्लॉक, भारत रत्न, 6th DR and 6th GY. Very good. Yes, GY. Do this thing. It relax your neck. Relax your shoulders. Very good. Now here. Now here. सिर के ऊपर. सिर के ऊपर. Again at the back of the head. And do like this. Rotate. Rotate. Very good. Very good. You will see that it relaxes your back. It relaxes your neck. And it relaxes your shoulder. Very good. And in reverse. And in reverse. Do like this. Do like this. Do like this. Yes. Jaldi se, jaldi se. Very good. Very good. Very good. And here. And here. Okay. Okay. And on your head. On your head. And do like this. Do like this. जल्दी से rotate your wrists only. Arms नहीं, सिर्फ wrist. In the opposite direction also. In the opposite direction. चलिए. Now relax. And you will see that your muscles of the neck, your muscles of the shoulder gets relaxed by this exercise, right? Now be attentive. Now be attentive. बिल्कुल. 6 GY. इधर ध्यान से. And be attentive now. Now what happens? What happens again? हम जिसके पास वर्कशीट नहीं है उसको शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे. जिसके पास वर्कशीट है क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम, because last time there was a storm, so that's why we have to leave the classes. So what is the question? See here, everybody. पर्सन जो भी नाम दिया हुआ है, पर्सन कैन नॉट सी इन
dim light or dark. But you have to tell disease, name of the disease, cause of disease, cure of disease. Okay. Now who will tell me? Class 6. Arjun. अर्जुन ने बेटा टूवर्ड्स विंडो सेकंड बेंच पे जो गर्ल है वो आ जाओ जल्दी से माइक ऑन कर लो नेक्स्ट एमी से पूछना है हमने इसलिए फटाफट एमी वाले तैयार रहेंगे हाँ जी बेटा व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस. इट इज नाइट ब्लाइंडनेस बिल्कुल ठीक है व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल या विटामिन इट इज विटामिन ए what is the cure of the disease which diet should be given Some green leafy vegetables. green vegetables green vegetables, then mainly carrots, pomegranate, main these are, right. You sit down. Somebody else, somebody from ME, what I am asking, please listen to it. What is the function of vitamin A for our vision? What is the role played by vitamin A? Yes. ME. Yes. What is the role of vitamin A? क्यों उसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस हम देख नहीं पाते हैं किसी की नजर कमजोर हो some students they have specs so what the doctor say so have vitamin A tablets right and one important source is cod liver oil also rich source of vitamin A. Yes, somebody from ME. Tell me how vitamin A is important for our vision. Anybody? May I ask somebody? So in ME, towards window, the last bench, the boy in the blue shirt. आओ जल्दी से आ जाओ जल्दी से कम क्विकली देखो एबल में बहुत बच्चे हैं चलिए आओ फटाफट से आओ come come switch on the mic and then tell हाँ what is the vitamin A बेटा what answer no somebody who knows the answer please come near the mic हाँ बोलो बोलो जल्दी से आओ if somebody knows come quickly नहीं आप बैठो एमी में चलिए एबल में बच्चों को पता है यस द फर्स्ट बॉय मिडिल रो यस
पहले देखो, हेलो बोलो, देखिए आपकी आवाज आ रही है? मैम हाँ बोलिए, अब बोलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन ए? it enhances our sight eyesight. कैसे कैसे? अच्छा आप बैठो, एक गर्ल का हाथ खड़ा है बेटा, टुवर्ड्स विंडो, थर्ड बेंच। हाँ जी, जल्दी से, कम क्विकली, जोर से बोलो बेटा। Right. हम्म, चलिए आप बैठो बैठो, मुझे आवाज आ भी नहीं रही है, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस, बट यहाँ पे देख लो, लिख लो, राइट? सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन ए? बेटा हमारी आईज में एक पिगमेंट होता है रेडोप्सिन, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। सो विटामिन ए, राइट डाउन, है ना? ये कभी आपने ओलंपियाड का पेपर देना हो, एनएसओ का पेपर देना, तो उसमें क्वेश्चन आ जाता है। सो विटामिन ए is required to form, everybody write down, form rhodopsin in our eyes, which receive light. If there is no vitamin A, there will be less rhodopsin, less light enters in our eye. है ना? कोई चीज लाइट को लेगी ही नहीं तो हमें दिखेगा कैसे? राइट? एवरीबडी राइट डाउन, लिख लो, एमी, girls write down this, booker, boys, students write down, what is the function of vitamin A? This is the main function of vitamin, right? And chemical name of vitamin A is thiamine. I don't think you require this, but you should know this, that. और अगर रेडॉप्सिन नहीं भी याद रहता तो आपको ये पता होना चाहिए, विटामिन ए हेल्प्स इन रिसीविंग लाइट बाय द आई। हमारी आईज लाइट को रिसीव कैसे करती है? अगर विटामिन ए होगा तो वो रिसीव करेंगी, नहीं तो आंख के अंदर तक डिम लाइट जा ही नहीं पाएगी। और अगर आंख के अंदर तक लाइट गई ही नहीं, हाउ कैन वी सी, राइट? तो Excuse me, ma'am, on which worksheet we are? बेटे जो पुरानी वर्कशीट है, लास्ट वीक वाली, रेशमा है ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट, डू यू हैव? Ma'am, which one? क्वेश्चन फर्स्ट ही हम कर रहे हैं बेटा, रेशमा वाला, Okay, thank you, ma'am. ठीक है? आपके क्वेश्चन क्या है, मैंने वो थोड़े से स्मॉल उसमें लिखवा दिए कि विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम, नाइट ब्लाइंडनेस, विच फूड कंपोनेंट ये बता दिए, सजेस्ट मे बी लैकिंग इन द डाइट विटामिन ए, और कौन से फूड कंपोनेंट चाहिए, ठीक है? Excuse me, हाँ जी, if we take vitamin A in excess, then इफ वी टेक excess vitamin A. in vitamin A in excess, generally vitamin A does not harm, excess of vitamin A वैसे हमारी बॉडी में होता नहीं है, क्योंकि नेचुरल चीजों से किसी भी विटामिन का एक्सेस नहीं होता है, बट यू इफ यू टेक लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स देन दे अफेक्ट अवर लिवर। विटामिन ए का एक्सेस हमारे लिवर को खराब कर सकता है अगर हम बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देंगे। बट अगर आप ये कहो कि रोज हम गाजर का जूस पी रहे हैं तो इससे विटामिन ए एक्सेस में हो जाएगा, नो, बिकॉज कैरेट जूस हैज मेनी अदर न्यूट्रिएंट्स आल्सो। नेचुरल चीजों को एज सच खाने से कोई भी हार्म नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल वी प्रोसेस इट। हम उसको प्रोसेसिंग करके बहुत ज्यादा, जैसे आजकल फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो वी हैव लेस टाइम बट स्टिल
बिकॉज मेनी पीपल, मेनली जो लोग जिम में जाते हैं, एवरीबडी हियर, वो क्या करते हैं, प्रोटीन पाउडर ले लो, प्रोटीन्स खाओ, प्रोटीन्स खाओ, प्रोटीन्स आर गुड, है ना, बट ओनली प्रोटीन्स आर बैड. यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो, यू नीड फैट्स ऑल्सो. ऐसा नहीं कि घी खाना बंद कर देना है, ठीक है, थोड़े अमाउंट में, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें नहीं, बट दाल में देसी घी डाल के खाते हो, इट्स गुड फॉर हेल्थ. चपाती में देसी घी लगा के खाते हो, इट्स गुड फॉर हेल्थ, राइट, बट रोज पकौड़े तल के खा रहे हो, इट्स बैड फॉर हेल्थ, राइट. एंड द फैट्स, अगर आप मूंगफली खा रहे हो, इट हैज फैट्स, इट इज गुड फैट, इट इज गिविंग न्यूट्रिशन टू अवर बॉडी. इफ यू ईट पोटैटोज, इवन देन दे आर गुड, बट अगर हम प्रोसेस करके खाई चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन जूस इज गुड, बट द शुगर फॉर्म्ड बाय शुगर केन जूस इन एक्सेस इज हार्मफुल, क्योंकि प्रोसेसिंग की गई है. चीज, जो पनीर आप खाते हो, दैट इज गुड, बट जो वो पिज्जा चीज आ जाता है, दैट इज हाईली प्रोसेस्ड, इट इज हार्मफुल. एग्स इफ यू ईट, इट गिव्स यू प्रोटीन्स, बट अगर प्रोटीन पाउडर, जो जिम में लोग खाते हैं अपने मसल्स बनाने के लिए, प्रोटीन पाउडर्स बहुत ज्यादा ऐड, दैट डैमेजेस लिवर, दैट डैमेजेस किडनीज, राइट. सो प्रोटीन्स इन प्योर फॉर्म आर हार्मफुल. प्रोटीन्स एज सच इन नेचुरल फॉर्म आर यूजफुल. दूध पियो, दही खाओ, नॉन वेज खा रहे हो वो भी खाओ, ठीक है, बट ऐसा तो नहीं ना कि नॉन वेज में से सिर्फ प्रोटीन्स निकाल के आप खा रहे हो. Eggs cow, that is good for health. But protein powders are harmful. That pizza cheese, which is highly processed, is harmful. The maida, which is the processed form of wheat flour, आटे की ही प्रोसेसिंग करके मैदा बनता है, that is in excess it is harmful. ठीक है, तो बहुत ज्यादा हम प्योर करके, प्रोसेस करके जो चीजें खाते हैं वो हार्मफुल है. बहुत ज्यादा वाइटामिन, अगर हम सप्लीमेंट्स खाते जाएंगे, कैप्सूल्स खाते जाएंगे, उनके पाउडर्स खाते जाएंगे, दैट आर हार्मफुल. बट वाइटामिन इन नेचुरल फॉर्म, दे आर यूज, दे डू नॉट हार्म अवर बॉडी, उनसे कभी हमें एक्सेस ही नहीं हो. इज इट ओके? चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए. ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि इफ वी रिमेन इन, इन योर होम, आपका घर बहुत सुंदर बना हुआ है, आपका दिल लगता है, वहां पे थिएटर भी है, वहां पे सब कुछ है, वहां पे आप वीडियो गेम्स भी खेल रहे हो, इसलिए आप खेलने बाहर नहीं जाते, है ना. schools में भी, although there are many activities in the school, but you get exposure to sunlight for a small time. बाहर ये खिड़कियों से धूप आ रही है, बट इट इज ऑफ नो यूज जब तक आप बाहर धूप में ना जाओ. ठीक है, आजकल बच्चे मोबाइल्स पे लगे रहते हैं, घर से बाहर नहीं जाते. तो व्हाट हैपेंस देन? आई सी चिल्ड्रन. कितने बच्चे रनिंग कर सकते हैं, जरा रेज योर हैंड्स. हाउ मेनी ऑफ यू रन फास्ट, बिना उनको सांस चढ़े, बिना उनको टांगों में दर्द हो? वेरी गुड इफ यू कैन. बट many students, many kids I have seen that they have weak bones. Adults mainly have weak bones due to deficiency of, yes, tell me, Aurora. Anybody from Aurora? Yes, middle row में बेटा, last bench पे जो boy है वो आ जाओ. If one remains indoor, don't get exposed to light, their bones become weak due to which disease? कौन सा डिजीज है? रिकेट्स. कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से? Vitamin D. विटामिन डी. वेरी गुड. डज सनलाइट हैज विटामिन डी? क्या सनलाइट के पास विटामिन डी है? Yes. क्या सनलाइट से जो लाइट आती है वो अपने साथ विटामिन डी लेके आती है? Sunlight, yes, there is one boy I think in Aurora only, towards window. आ जाओ, बताओ, आओ, बताओ, बताओ, कम कम. आप ही कोई कह रही हो? हाँ. Does sunlight has vitamin D? Then how sunlight helps in forming vitamin D? Not with the nutrients of our body. Yes, with ultraviolet radiations. बैठो बेटा, हम चले अभी बात करिए. So you, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप लिख लीजिए.
Write down no exposure to sunlight. Lack of vitamin D causes rickets. Symptoms are weak bones or bent bones. Sunlight, it is absorbed by skin. कौन सी रेस? UV रेस. Stimulate or you can say activate liver to form vitamin D. Vitamin D is formed in our body. कौन बना रहा है? लिवर और किडनीज में भी बनता है. चलिए अभी हम लिवर की ही बात करते हैं. ठीक है. Other sources of vitamin D, that is milk, then curd, then you can say that eggs, थोड़ा सा उसमें से भी मिलता है, and vitamin D supplements. Then another important thing जो हम हर जगह बता रहे हैं, how vitamin D form strong bones. कैसे? बोन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करती है? सो व्हाट इज द आंसर? दैट विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, लेना, अंदर लेना, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय बोन्स. सो बोन्स आर फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम. तो विटामिन डी अगर नहीं होगा तो बोन्स, चाहे आपके ब्लड में जितना मर्जी कैल्शियम है, बोन्स वहां से कैल्शियम नहीं ले सकती. सो दे कैन नॉट. ठीक. सो क्वेश्चन इज नेम द डिजीज. देखिए जिसके पास वर्कशीट है, जिसके पास नहीं है वो आंसर लिखते चलो. नेम द डिजीज विच कॉजेज वीकनिंग ऑफ बोन्स. यस, कौन बोला? बोरलॉग. बोरलॉग में से आ जाइए बेटा. हाँ जी. विटामिन डी सनलाइट से ऐसे नहीं बनता कि firstly UV rays come in our epidermis layer and combine with 7 dehydrated cholesterol to form vitamin D3. बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है. इज एब्जॉर्ब्ड बाय स्किन, एक्टिवेट लिवर टू फॉर्म विटामिन डी बाय चेंजिंग. आप यहाँ पे लिख सकते हो, आपको पता है तो वेरी गुड. बाय चेंजिंग कोलेस्ट्रोल टू विटामिन डी. वेरी गुड. और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे बन रहा है दोबारा से, कि कोलेस्ट्रोल से विटामिन डी बनता है. तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख देती हूँ. दैट इज कोलेस्ट्रोल यूवी रेडिएशंस. सनलाइट में है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. इट चेंजेस इनटू विटामिन D3 in liver. Cholesterol, cholecalciferol, not cholesterol, I'm sorry, cholecalciferol इस तरह से बनता है. तो इसका मतलब नाउ यू नो, हम कहते हैं ये ना चीज खाओ, कोलेस्ट्रोल है इसमें.
but cholesterol is required in our body. You can see here. हाँ जी बेटा, बोरलॉग में से बचे टूवर्ड्स वॉल. फोर्थ ये द बॉय इन आई थिंक येलो शर्ट, कम आजा आजा जल्दी से आओ बेटा, आजा आजा आजा. यस, कम नियर द माइक. कोई बात नहीं, मैं पूछती हूँ आपसे क्वेश्चन, आ जाओ. यस, माइक ऑन करो. somebody help him to switch on the mic. हाँ जी बेटा, नेम द डिजीज विच कॉजेज वीकनिंग ऑफ बोन्स. क्या नाम है डिजीज का? Brittle bones, sir. Brother, my diabetes. Brother, my ऐसे नहीं, आराम से आराम से. ठीक है, पीछे एक स्टूडेंट का हाथ खड़ा हुआ था मिडल रो में से, वो आ जाए. ये रहने दो, रहने दो, ऑन रहने दो. somebody from आ जाओ आ जाओ, the girl who is standing, yes, come. How the sunlight helps in making vitamin D? sunlight. Converts yes, sunlight has UV rays which convert विटामिन डी का जब कट करती है into vitamin D3. बंद करो, माइक ऑफ करो, बैठो अपनी सीट पे. हाउ डज द सनलाइट हेल्प्स इन मेकिंग अवर बोन स्ट्रॉन्ग? तो लिखो जरा, जिसके पास वर्कशीट है वो लिखो दैट इट कन्वर्ट्स, सनलाइट कन्वर्ट्स cholesterol into vitamin D3, cholesterol into vitamin D3. और फिर सेकेंड पॉइंट ये लिखिए, विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय बोन्स. 2 पॉइंट्स होंगे. उसके बाद है हाउ डज द मॉडर्न लाइफस्टाइल कॉज वीकनिंग ऑफ बोन्स? ड्यू टू मॉडर्न लाइफस्टाइल वी आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट. ठीक है, जिसके पास लिख लो सब, राइट डाउन. नहीं भी आपके पास वर्कशीट है, इवन देन राइट डाउन. ड्यू टू मॉडर्न लाइफस्टाइल वी आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट. बुकार बच्चों लिख लो. What should be done to cure the disease in colder countries? आप कनाडा चले जाओ, अमेरिका में साउथ डकोटा चले जाओ, वहां पे इतनी बर्फ पड़ती है, लोग बाहर ही नहीं निकलते. क्या करें, सनलाइट मिलती नहीं है. सो बाय टेकिंग विटामिन D3 सप्लीमेंट्स, व्हाट शुड बी डन? तो यहाँ पे लिख लो, इन कंट्रीज लाइक कनाडा, राइट डाउन. इन कोल्डर कंट्रीज लाइक कनाडा, अलास्का, in colder countries like Canada, Alaska, the people take vitamin D3 supplements. People take vitamin D3 supplements. Vitamin D is called as, yes, 6DR. 6DR में कोई मुझे बताएगा? Vitamin D is called as sunshine vitamin. Why? 6DR, roll number 10. 6DR, roll number 10. Why vitamin D is called as sunshine vitamin? जल्दी से आओ, जल्दी से. Somebody switch on the mic. क्यों बोलते हैं इसको sunshine vitamin? माइक ऑन करो बेटा.
हाँ जी, बोलो जरा, देखिए आपकी आवाज आ रही है? Because it requires, because बाकी से बैठ जाओ, because it requires sunlight, because synthesis of vitamin D requires, बैठो बेटा, because synthesis of vitamin D requires sunlight. ठीक है, बाकी आप सब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि कैल्शियम का क्या रोल है। तो राइट डाउन, bones are formed of calcium. Person with weak bones should take calcium supplements and calcium rich diet, कर्ड, मिल्क, एग्स, ये लेने चाहिए। एंड कैल्शियम के साथ हमेशा हम विटामिन डी देते हैं, क्यों? बिकॉज विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। देन नेक्स्ट इज deficiency of iodine causes, पूरा लिखे हम इधर। लिखो क्वेश्चन बेटा। राइट डाउन। यस, 6 G by मिडल रो, फर्स्ट बॉय आ जाओ जल्दी से, माइक ऑन करो जल्दी से, क्विक। This is goiter. Very good. This is the disease is called goiter. हाँ जी, गोइटर को क्योर करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए? आयोडाइज्ड सॉल्ट, वेरी गुड। देन नेक्स्ट बॉय, इसी के साथ जो दूसरा लड़का है, आ जाओ। यस, द सेकंड बॉय, कम क्विकली। टेल मी द पार्ट ऑफ बॉडी विच रिक्वायर्स आयोडीन इज, कहाँ पे आयोडीन यूज होता है? जोर से, हाँ। It is, चलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, is thyroid gland in neck. Everybody write down, हमारी नेक में एक ग्लैंड है, thyroid gland in neck. It requires iodine. Then, what are the symptoms of goiter? Who will tell me? जल्दी से। कैसे पता चलेगा कि इसको गोइटर है? यस, symptoms of goiter. Able, yes, able, tell me. Yes, middle row, second boy, जल्दी से।
Person's neck will be swollen. Yes, mainly swollen neck. एक तो swollen neck है, मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ. Increase in weight. More sleep. Person feels sleepy all the time. Then next is so why iodine is required? Next is ये भी लिख लो, important point है. Thyroid gland requires iodine for synthesis of, हम for making लिख देते हैं for your easy, for making of hormone thyroxine. Why iodine is required? For making hormone thyroxine. ठीक है, और एक लास्ट और हम करेंगे, that is person feeling हाँ जी बेटा, एक मिनट हम बात करते हैं. फीलिंग वीक, पेल स्किन, breathlessness, high rate of breathing, पेल का मतलब होता है पीली सी स्किन नजर आती है. What can be the disease? Yes, can anybody tell? भारत रत्न. Yes, भारत रत्न में से बच्चे जल्दी से. हर्षिता. हर्षिता भारत रत्न बेटा. Yes, somebody from Bharat Ratan, if you can hear me. नहीं. हाँ जी, बोलिए बेटा कि what can be the disease? पीली सी स्किन पड़ी हुई है, रेड नहीं है. द डिजीज यहाँ पे क्या है, देखो इधर देखो सर, सर इधर. यस, एनीबडी हु नोज द डिजीज? यस, इन भारत रत्न देयर इज वन गर्ल. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. क्वाशियोरकर नहीं बेटा, नॉट क्वाशियोरकर. पीली स्किन है, रेड नहीं है. यस, एनीबडी कल ही पेपर देके हटे हो बेटा. The disease is, everybody note down, disease is anemia. डॉक्टर के पास जाओ कि हमें लेजीनेस, वो आपके आईज देख के, नेल्स देख के बता देते हैं कि एनीमिया है. इफ योर नेल्स आर येलो, इट इज एनीमिया. कॉज क्या है? लैक ऑफ आयरन, लेस हीमोग्लोबिन. अगर आयरन नहीं है तो
हीमोग्लोबिन कम बनेगा। ठीक है, एवरीबडी हियर, एवरीबडी। और हीमोग्लोबिन कम है तो लेस ऑक्सीजन रीचेस अवर बॉडी। और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, लेस एनर्जी इन अवर बॉडी। लास्ट चीज सुन लो बस, कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेके जाता है। कम हीमोग्लोबिन होगा, लेस ऑक्सीजन इन अवर बॉडी। और ऑक्सीजन का क्या काम है हमारी बॉडी में? दैट इज प्रोड्यूस एनर्जी, राइट? सो एनर्जी, देयर विल बी लेस एनर्जी। और एनर्जी नहीं है तो क्या होगा? फीलिंग वीकनेस, ब्रेथलेसनेस, सांस चढ़ता जाएगा और हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगी। सो व्हाई आयरन इज रिक्वायर्ड? फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इज इट ओके? सो दिस इज, एक बार हम जल्दी से रिव्यू कर ले फटाफट से। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये मेन मैं बता रही हूं। फंक्शन क्या है? विजन, नर्वस सिस्टम। If you write, it will be beneficial for you. इम्यून सिस्टम, हमारा डिफेंस सिस्टम जो बीमारियों से लड़ता है, एंड बोन्स, इनके लिए चाहिए, फंक्शन है ये। टाइम हो गया, आई थिंक आपका टाइम हो गया जाने का, बट ये आप रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। डेफिशिएंसी, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, या BERI भी हो जाता है, स्कर्वी एंड रिकेट्स। So these are, so vitamin B is very important for your brain. थोड़े से देखो सोर्सेस क्या है विटामिन बी के, वो खाया करो, ज्यादा ब्रेन चलेगा, ज्यादा पढ़ाई आएगी और ज्यादा मार्क्स आएंगे। हेल्दी रहना है तो विटामिन सी लो। एंड आई थिंक एवरीबडी वांट्स टू गो, सो ओके बेटा, बाय बाय, थैंक यू, वी विल मीट नेक्स्ट टाइम अगेन, बाय बाय, थैंक यू टीचर्स।